model for the railway station. Remember, beyond this, you're also going to be seeing him inaugurate the Ayodhya airport as well. Ayodhya is getting a new airport. What's also going to be exciting for everybody in Ayodhya ahead of the Ram Mandir consecration, which takes place on the 22nd of January, is that the art that has been put onto the walls of the airport, all of that actually depicts the life of Lord Ram. So that's going to be interesting to see when we do end up cutting across to those visuals when that inauguration takes place. But right now you can see that the Prime Minister first on the cards is going to be inaugurating the Ayodhya Dham railway station. We'll go through the special features of the railway station. स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। सुनील मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनिए, ये जो नया That was a short description of what you can see in your visuals right now. We'll go through that once more for you. The Prime Minister is currently interacting with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath as well as the Union Minister Ashwini Vaishnav. Remember, this is going to be because he is inaugurating a new revamped version of the Ayodhya railway station, which is now going to be known as the Ayodhya Dham Junction railway station. But what's also important to note is that this is not the only project when it comes to the railways in Ayodhya that's going to be inaugurated. He's also going to be flagging off multiple trains. Now, these trains are not just going to be the Vande Bharat Expresses. It's also going to be the inauguration of a new superfast train, which is known as the Amrit Bharat Express. Also giving you the details of the Ayodhya Dham railway station on your screens right there. Now, we'll also tell you a bit more about the Amrit Bharat train. It's essentially a push-pull train, and it has non-air-conditioned coaches, but it has locos at both ends for better acceleration purposes. You can see the Union Minister right now seems to be explaining the model of the newly revamped train station right now, along with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, also listening to the presentation that the Union Minister is giving. The Prime Minister is going to be inaugurating this in a very short while from now. Beyond this, he's also going to be inaugurating other development projects worth over 15,000 crore rupees, and that also includes the new airport that Ayodhya is going to be receiving today. Once he inaugurates the Ayodhya airport, he's also expected to address a mega rally as well. Now, of course, all of this is a high voltage visit ahead of the Ram Mandir consecration, which is slated for the 22nd of January, where, of course, the Prime Minister will be there. He'd received an invitation a few weeks ago. Now, beyond this, we'll tell you more about what's going to be inaugurated by the Prime Minister. When it comes to railways, and that's what we're going to be focusing on right now, he's going to be flagging off 2 new Amrit Bharat trains, which are, again, a new category of super fast trains. Now, beyond this, he's also going to be flagging off 6 new Vande Bharat trains. And these routes that he's going to be flagging off include routes that are going to be from the Sri Mata Vaishno Devi Katra to New Delhi. Then it's going to be from Amritsar to Delhi. And we're also, before we give you more details on that, we're first going to take a look at a ground report that's come in. Excited and coming from each and every corner of the country just to witness this momentous occasion. And you can see 70-year-old Lata, who has come over here all the way from Maharashtra's Latur just to offer praise to Ram Lala, and in fact to offer her seva is what she says. Her energy depicts that what does she feels for Lord Ram and how historic it is for her. She's 70 years old. लता जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ। लातूर से आई हैं। यहाँ पर कब से ठहरी हुई हैं आप यहाँ पर कब से ठहरी हुई? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। और कब तक रुकने वाली है यहाँ पे? 1.5 महीना। 6 महीना यहाँ तक रुकने। धाम
बनकर तैयार होगा। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसके नाम को लेकर भी जो भेजा था पत्र, और अब जब कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान हुआ कि अब ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम के नाम से जाना चाहेगा। फिलहाल आप देखिए दूर से अगर इस ट्रेन पर नजर डालिए कि किस तरह से ये स्लीपर ट्रेन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। कुछ दिन में ये भी कहा जा रहा है कि अगले मार्च तक वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी जो है वो पटरी पर। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड है आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत एक्साइटेड है हम लोग और हम लोग बस मिलना भी चाहते थे पर मिल नहीं सकते। लेकिन आप उनको देख तो सकते हैं। नो मैम, वो भी नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल होगा, वो बाहर आगे खड़े हुए हैं और देखिए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। कितने एक्साइटेड है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? कोई गाना सुना दीजिए आप लोग अच्छा सा। चलो सुनाओ। हाँ बिल्कुल अच्छा सा सुना दो। कुछ भी जो आपको भगवान राम से रिलेटेड हो, कुछ भी अच्छा। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। जय आप लोग अभी गाना गा रहे थे, क्या गाना गा रहे थे थोड़ा बताइए, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी सुनाइए आप लोग। After that ground report, we're heading back to live visuals that are coming in right now. You can see the Prime Minister there in one of the trains. It's either going to be the new Amrit Bharat train, which is a new class of superfast trains, or it's going to be one of the Vande Bharat expresses. But remember, he's going to be inaugurating all of this today. It's a major boost to connectivity within the Ayodhya region. And over there in the visuals that we were just showing you, he was interacting with the officials within the train, probably learning a bit more about the special features of the train and whatnot. But beyond that, remember, he continues to be accompanied by the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, as well as the Union Minister for Railways, Ashwini Vaishnav. Now, remember, first he's going to be inaugurating the newly revamped version of the Ayodhya railway station. It's the Ayodhya Dham railway station now. It's a new junction that's been introduced. And he's going to be also inaugurating, post this, a new airport for Ayodhya. That is going to be very exciting when it happens. It's one of the most highly awaited boosts to connectivity within the region. And it's also slated to be a major boost for tourism within the economic sector of Ayodhya as well. But again, through these visuals, you can see that the Prime Minister is on the ground. You can see the Uttar Pradesh Chief Minister also there smiling in the background as the Prime Minister interacts with and learns more about the special features of the train there. When it comes to what he's going to be inaugurating today, he's going to be flagging off 6 new Vande Bharat expresses, and also he's going to be flagging off 2 new superfast trains. It's a new category of superfast trains, which are called the Amrit Bharat trains. So that's what we're going to be seeing over the next hour or two, and then afterwards he's going to be heading to the Ayodhya airport. Once he heads to the Ayodhya airport, he's probably going to be given a tour of the facility. He's also likely to be told more about the special features that are there. And what's also important to note is that when it comes to the new Ayodhya airport, it is also a green certified building. And again, making buildings and construction more environmentally friendly, that has been one of the main aims of the BJP-led government ever since it came into power. It's also one of the main messages that continues to be pushed forth, especially when it comes to messages that are pushed out at international platforms like the G20, which we recently saw when India was holding the presidency. Now, remember, we'll take you back through what's going to be taking place today in Ayodhya, as the Prime Minister had landed just a short while ago. When he had landed, he was greeted by the Uttar Pradesh Chief Minister, greeted and garlanded. And then after that, he took part in a very short roadshow where he greeted thousands who had come out from all corners of the country to welcome the Prime Minister to Ayodhya. Now, why exactly is there so much excitement on the ground? Why is the sentiment so cheerful at this point? Because in January, on the 22nd, the Ram Mandir is going to be consecrated. And all of this is a lead up. Okay, right now we're going to tell you a bit more about the live visuals right now. The Prime Minister is flagging off some of the trains. You can see the big Make in India logo as well on the sidelines. He's flagging off the new revamped version, flagging off Vande Bharat, flagging off the Amrit Bharat as well. And okay, there you have it, the flagging off by the Prime Minister.
as the Union Minister and the Chief Minister clap in the background for this historic inauguration of the trains that are going to be boosting connectivity within the region. And this is in part one of the main reasons as well of why people are so excited to welcome the Prime Minister, because again, it's not just the lead up to the Ram Mandir consecration that's taking place on the 22nd, it's also the major boost to infrastructure, the major boost that Ayodhya is receiving for the people. That's going to boost connectivity, infrastructure, multiple development projects which have costed over 15,000 crore rupees to develop. That is what is on the cards today. We're already seeing the first segment of that being inaugurated, where the Prime Minister is very cheerfully waving the flag, giving the go-ahead for the trains to begin. नरेंद्र मोदी का एक झलक देखने के लिए, और देखिए इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेन से बच्चे किस तरह से मोबाइल लिए हुए खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिल जाए। और देखिए अब ये अयोध्या धाम जंक्शन से जो पहली ट्रेन है उद्घाटन के बाद, ये है अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये अब ट्रेन चल चुकी है। और ये ट्रेन सीधे अगर बात करें तो अब बता दें कि अब ये गोरखपुर रुकेगा। अब ये देखिए स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर नजर आएगी तस्वीरें की। यहाँ पर देखिए फिलहाल किस तरह से सिक्योरिटी और इसके साथ ही पूरे रेलवे स्टेशन को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त रेल मिनिस्टर भी मौजूद थे और इसके साथ यूपी के सीएम मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। और अब ये तस्वीरें देखिए, अगर अंदर कोच की तस्वीरें दिखाना चाहें तो एक झलक हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे जो है खिड़की पे खड़े हुए हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिल जाए, मोबाइल लियो। ये देखिए पूरा कोच इस वक्त किस तरह से भरा हुआ है। ये देखिए अगली तस्वीर जो हम दिखाएंगे बाहर खिड़की से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक हम आपको दिखाना चाहें कि ये देखिए किस तरह से पूरे बाहर की तस्वीरें। यही है वो अयोध्या धाम जंक्शन जिसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री ने। अब ये पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बच्चों का उत्साह देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री की ये पहली झलक देखने के बाद बच्चे इंतजार। दिनेश मैं बता दूं कि बच्चों के अंदर जितनी खुशी देखने को मिल रही है। अब ये अंदर की तस्वीर देखिए कि बच्चे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और अब ये देखिए कि किस तरह से, कैसा लगा देख के? इतने पास से देखा, मैंने बोला था ना कि देखोगे आप। बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि लास्ट टाइम भी वी वर नॉट एबल। देखिए बच्चों के आपके जितने भावुक है, बच्चों की खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार देख ले और पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। कैसा लगा देख के? मैम बहुत अच्छा लगा हम लोग को देख के। अच्छा लगा? यस मैम, सब कुछ कितना इंतजार, बहुत एक्साइटेड थे। टीवी में देख रहे रियल में। अच्छा, रियल और टीवी वाला फीलिंग। अच्छा बताओ कैसा लगा? सुबह से इंतजार, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से। अच्छा कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो देखिए बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि क्या, बार बार पूछ रहे थे मैडम या दीदी बता दीजिए कब मिलेंगे। और देखिए अब ये जिस तरह से ये ट्रेन जो है अयोध्या धाम से चल चुकी है और पूरे कंपार्टमेंट में केवल जय श्री राम ही सुनाई दे रहा है। तो इस वक्त अयोध्या के साथ साथ आसपास की जगहों के जितने बच्चे पहुंचे हुए बेहद एक्साइटेड है और राम में हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? एक गाना सुना दीजिए इसी बात पे, अच्छा सा कुछ भी। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, निर्मला की दिवालियां मनाऊंगी। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी। आप ये देखो, ये देखिए अब बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हर गली हर मोहल्ले में केवल लोग नजर आ रहे हैं और सभी जय श्री राम कह रहे हैं और हर गली हर मोहल्ले में यही आवाज गूंज रही है पूरे कंपार्टमेंट में से। ये आवाज सुनिए आप बच्चों की। रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे मोदी जी को देख के, मैं बहुत खुश हूँ। एकदम उन्हें घर जाके क्या बताओगे? मोदी जी को देखा और बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख, आई कांटेक्ट किया योगी जी से, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? कैसा लगा? जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मतलब कितने देर से इंतजार कर रहे थे? बहुत देर से, 2 घंटे 3 घंटे से। तो पूरे कंपार्टमेंट में इसी
इसी तरह की खुशी जो है, हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो इसी तरह से दिनेश, मैंने तस्वीरें दिखाई अयोध्या धाम से इस ट्रेन की शुरुआत हुई और जहां इसके अंदर बच्चे, स्कूली बच्चे भरे हैं जो इंतजार कर रहे थे। और इस झलक के बाद देखिए किस तरह की खुशी है, क्योंकि बेहद लंबे वक्त से वो इंतजार था और जब उन्होंने अपने सामने से बिल्कुल करीब से प्रधानमंत्री को देखा तो खुशी तो जाहिर है होनी ही थी। अब इसके बाद ये ट्रेन देखिए किस तरह से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है अमृत भारत, और इसी के साथ विकास की रफ्तार और तेजी के साथ आगे भी देखने को मिलेगी। जी दिनेश। All right, with that, we're going to be